Now it's my great honor to invite our esteemed Commissioner Sir, Shri Ajit Kumar Srivastava, whose leadership and vision has been guiding us in driving through this mission of tribal education. Please join me in welcoming Sir with a round of applause. Thank you, Prashant. You all are looking very serious. कोई खास बात? Relax हो जाइए. Now I am going to ask two questions. First question: how many of you do not understand Hindi? Kindly raise your hand. One. So there is one person who has some difficulty understanding Hindi. So my address will be mixed language, right? Second, how many of you do not trust in God? How many of you do not trust in God? You might find it awkward. आपको लग रहा होगा इस सवाल में क्यों पूछ रहा हूँ? इसका relevance अभी 10 मिनट में पता चल जाएगा. So I believe everybody has a faith in God. अब एक तीसरा मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ, a small story, and then I will start what I want to say. There was a city, एक शहर था जिसके बीच में से नदी बहती थी. There was a river, and city was in two parts. So a bridge was being made. ये कहानी मैंने एक आध लोगों अपने ऑफिस से सुनाई है, तो उनसे क्षमा चाहूँगा अगर रिपीट हो रही है. Now there were laborers working. तो किसी ने पूछा एक लेबर को बुला के कि आप क्या कर रहे हैं? उसने बोला कि मुझे तो डेली पैसा मिलता है और मेरा घर चलता है इससे. So I am just moving a stone. मैं एक पत्थर यहाँ से उठा के वहाँ ले जा रहा हूँ and I am getting paid for it. Very good. किसी दूसरे से उसने पूछा आप क्या कर रहे हैं? तो उसने बोला कि बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में मुझे लिया गया एज अ लेबर and I am moving stone from one place to another place. So that is what I am doing. तो मैं ये पत्थर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा हूँ इस बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ. Very good. एक तीसरे बंदे से उसने पूछा कि लेबर से आप क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा कि शहर के लोग दो हिस्से में बटे हुए हैं, उनको आने जाने का साधन नहीं है. मैं उनके लिए जिंदगी में सुविधा प्रदान कर रहा हूँ जिससे वो अपने परिवार के पास जल्दी पहुँच सकें. तीनों सेम काम कर रहे थे, लेकिन तीनों का सोचने का नजरिया अलग था. All the three were working same. The third person said, I am connecting people. I am connecting one part of city to another part of city so that they can be with their friends. Now that is the difference we have to bring in. Now ask yourself, अपने आप से सवाल पूछिए आप क्या कर रहे हैं? क्या आप अपने घर के लिए सैलरी अर्न कर रहे हैं? क्या आप एक प्रोजेक्ट आपको किसी एजेंसी ने दिया है, आपके कॉन्ट्रैक्टर ने दिया, आप वो कर रहे हैं? या ट्राइबल बच्चों को इस स्कूल में लाके उनको पढ़ाई करवा रहे हैं? आपका प्रोजेक्ट क्वालिटी खराब हुई या स्लो चल रहा है, उसका क्या इम्प्लीकेशन है वो इसके लास्ट सेंटेंस में लिखा है. ट्राइबल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू एजुकेशन. आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका प्रोजेक्ट अगर आप टाइम से पहले दे देंगे तो वो बच्चा जो स्कूल नहीं जाता है वो स्कूल आ जाएगा. जिसके पास पैसे नहीं है उसको भारत सरकार पढ़ाएगी. जो जिंदगी में शायद कुछ नहीं बनेगा, छोटा मोटा काम करेगा, वो कुछ अच्छा बन सकता है. अब ये आपको सोचना है. This is your, you have to ask yourself whether you are going to do something so that the tribal children can come to school, they can study, they can become something in life. That is the importance of the work you are doing. Now, ये कॉन्क्लेव का आइडिया, ये वर्कशॉप का आइडिया मेरा था और मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैं आपसे भी नहीं मिलना चाह रहा. मैं आपको बताऊं, मैं आपसे नहीं, मैं आपके मेसन और लेबर से बात करना चाह रहा था. I wanted to speak to your mason and laborer, but of course I can't hold so many people here, I can't call so many people here. So I thought, why not the site engineer? And trust me, PSU के जितने इंजीनियर हैं उनसे पहले मैं कॉन्ट्रैक्टर के साइट इंजीनियर से बात करना चाह रहा था. How many of you are from contractor side? Can you raise your hand? हाथ उठाइए. मैं आप सबसे मुखातिब हूँ इस समय. आप सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं. You are my biggest stakeholder. You and your people, your laborer, your nation, they are my people. वो मेरे लोग हैं. वो अगर अच्छा महसूस करेंगे, वो अपने काम की इम्पोर्टेंस महसूस करेंगे, तो काम का लेवल बढ़ता जाएगा.
Now, one of my seniors, I was discussing with him, मैं उनसे चर्चा कर रहा था कि हमारा काम की प्रोग्रेस जो है कहीं कई जगह क्वालिटी इश्यूज आ रहे हैं, तो हम क्या करें। हमने आईआईटी लगा रखा है, एनआईटी लगा रखा है, तो उन्होंने बहुत पते की बात की। उन्होंने कहा, आई एम सॉरी अगर आप में से कोई आईआईटी एनआईटी से हो, उन्होंने कहा कि आईआईटी एनआईटी से दिमाग हटा दीजिए, वो सब बकवास है। उन्होंने कहा कि आपने अपने कॉन्ट्रैक्टर के आदमियों से बात की है। मैंने कहा नहीं। बोले आप ये गलती कर रहे हैं। आपने अपने पीएचडी के साइड इंजीनियर से बात की है। बोले नहीं। बोले आप आईआईटी एनआईटी फोकस कर रहे हैं, असली तो वो लोग हैं। They are the one who are doing our work. Have you given them respect? I said no, never. He said give them respect. And then this idea came to my mind. Why not? तो मैं आपसे बात करूँगा। आपके जितने बड़े अधिकारी बैठे हैं, उनसे क्षमा चाहते हुए मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी है। उनसे तो रोज करता हूँ। मुझे सिर्फ आप लोग जो बैठे हैं शुरू के एक दो लाइन के पीछे मुझे इनसे बात करनी है। आप स्कूल बनाइए, जल्दी बनाइए, अच्छी क्वालिटी का बनाइए, जिससे बच्चे स्कूल में पढ़ने आए। अब आज का जो सेशन है, आज के सेशन में हम क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, प्रोजेक्ट की प्लानिंग कैसी है इसमें फोकस कर रहे हैं। वी आर फोकसिंग ऑन क्वालिटी, ऑन प्रोजेक्ट प्लानिंग, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्लानिंग, व्हाट इज टू बी केप्ट इन माइंड, व्हाट इज टू बी नॉट केप्ट इन माइंड, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाट आर डूम्स, क्या करने हैं, व्हाट आर डोंट्स, क्या नहीं करने हैं, ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। आप लोग आज के सेशन में I can guarantee you it is going to be very fruitful session. हाँ, आप लोगों ने अपना फोल्डर देख लिया होगा, उस फोल्डर में किताब है। Have you seen it? I was very clear कि आप जब यहाँ बैठें और जब यहाँ से जाएं तो किताब हो कि हमको आज के दिन ये बताया गया है। आपको कल को भी पलट के देखना हो तो you can see the book and you can understand what was being told here. We will show you many pictures also because pictures leave impression. Now, our session is divided since it is for one day, केवल एक दिन के लिए है तो समय कम है। हर सेशन के बाद मैंने एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखा है 15 मिनट का। क्वेश्चन आपकी तरफ से आएगा। If you want to ask something, you can ask. I will control that session. I will be here 100% of time. I am not going anywhere. And then the question answer में you can ask your question. अपने सवाल पूछिए, खुल के पूछिए, बहुत लंबा मत पूछिए क्योंकि टाइम का डिसिप्लिन रखना है। नाउ दो तीन चीजें और हैं। मोबाइल साइलेंट के बारे में बता दिया गया है। आज का सेशन फ्रूटफुल तब होगा जब हम ये मान के चलेंगे कि इस चीज को जाके हमें इम्प्लीमेंट करना है। वी हैव टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स। ध्यान रखिए, आई हैव ऑल द रजिस्ट्रेशंस विद मी, द पीपल who have registered themselves for today's program. I have the list. I can name them. मैं नाम से बुला सकता हूँ। तो kindly don't be hesitant. संकोच मत करिए। इस प्रोग्राम को, इस वर्कशॉप को पूरी तरह यूज करिए। Now, coming back to what Mr. Meena was saying about quality. We have one case where there was a serious incident of quality concern. When I say serious point of view of complaint being made to the Prime Minister office and Honorable Prime Minister himself. Now that is very embarrassing for the PSU, for the contractor and for us. That was last year in August. Similarly, in recent inauguration, 3 sites were declared not qualitatively fit. उनको क्वालिटी में इशू के नाते इनोवेशन से ड्रॉप करना पड़ा। वो बहुत शर्मिंदगी की बात है। Shame on us. If Honorable Prime Minister is going to inaugurate 3 schools, 3 स्कूल जो देखने में बहुत टिप-टॉप सुंदर लग रहे हैं और उनकी क्वालिटी हमको खराब मिलती है, ये हम सब के लिए शर्मिंदगी की बात है और हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। नाउ कोई ब्लेम नहीं करना है, जो हो गया, आगे के लिए ध्यान रखना है। That we should not fail in our duty. Coming to the last part of my this address, I would not call would like to call it address. हमारे लोग जो हमारे ऑफिस में हैं, many of you know, almost all of them are retired people, but they are very competent. आपकी जो किताब है, अगर आप उसकी क्वालिटी देखेंगे, if you see at the quality, I don't think कि आपको IIT वाले ऐसी क्वालिटी अंदर दिखाएंगे क्योंकि वो इंग्लिश लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे जो मैं नहीं चाहता। My instructions very very clear कि मुझे कोड का कॉपी करके किताब नहीं चाहिए। I don't want copy of the code. I want something
which you can see and if you want you can use it in the field. तो जो किताब दी गई है, किताब इसलिए दी गई है कि वो आपके जितनी काम आ सके, अगर उसमें थोड़ा भी पोर्शन काम आएगा तो मैं मानूंगा कि मेरे लोगों का ये मेहनत सफल हुई है. I am very happy with the way the book has come. Book looks good. मेरी टीम से रिक्वेस्ट ये है कि the only people who are speaking, who are presenting, have to be on stage, nobody else. Nobody will speak out of turn, neither my people nor you. And time has to be followed because sessions are intense. Everybody from my people have to follow time and they have to be strictly on time. Now coming to the importance of the school education. Additional Commissioner Mr. Meena has already told you. But the government of India wanted it to a central sector scheme. Central sector scheme means कि EMRS 97-98 से चल रहे थे, लेकिन वो EMRS की बिल्डिंग अलग है, सब कुछ अलग है, कैपेसिटी इंक्रीज हुई है. A beautiful design has been made. School looks very good. I must say, school looks very good once it is complete with the landscaping and everything. हमारा काम है वो बच्चे जो कि शायद कई जगह झोपड़ी में रहते होंगे, वो इस तरह के स्कूल में पढ़ेंगे तो आप सोचिए उनका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा. मेक स्कूल फास्टर, मेक स्कूल गुड. आप भगवान का काम कर रहे हैं. रामायण में शबरी थी ना, शबरी और शेड्यूल ट्राइब. कई लिटरेचर है जहाँ कहते थे कि रामायण में जो वानरों की सेना थी और जो जंगल में रहते थे वो बेसिकली इसका मतलब था कि वो शेड्यूल ट्राइब है. मैंने भगवान का नाम इसमें लिया. आप में से किसी प्रोजेक्ट इंजीनियर से मेरी फोन पे बात हुई थी जब मैं प्रोजेक्ट रिव्यू कर रही हूँ. इन्होंने राम का रिंगटोन लगा, कॉलर ट्यून लगा रखी थी. मैंने कहा तुम्हारा काम इतना स्लो क्यों चल रहा है? व्हाई नॉट लेबर? आपको पता है कि भगवान राम का काम कर रहे हैं. It is God's work. Whichever God you believe in, it is Jesus, Waheguru, Allah, Ram, any God. It is God's work. Every religious text says कि जो छूट गए हैं पीछे, जो पिछड़े हैं, रह गए हैं पीछे, we have to bring them forward. We have to do that. When you are doing your job, don't forget this is God's work. भगवान का काम है ये. Do it in God's name. इसको बिल्कुल ये मत सोचिए कि मेरा काम नहीं है, बोझा है, ये है, वो है, मैं तो चला जाऊंगा, मैं एग्लो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लूंगा. जब करिएगा तब करिएगा. Do it in God's name. And विश्वास करिए, this is the good work you are doing. आपको इसका फल कभी न कभी जरूर मिलेगा. तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, जो मैंने कहा था कि 10 मिनट बाद में बताऊंगा कि why I'm talking about God. This is the reason I'm talking about God. Every religion says, Ramayana says, everyone says. Now, in 2028-29, 2018-19 में new EMRS scheme came. Mr. Meena has already told you, I'm not going to repeat myself. लेकिन जब 2018-19 में था, तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का आइडिया क्या था? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो he was working very diligently for scheduled tribe. And then he was very clear कि scheduled tribe के जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं आ पा रहे हैं. मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ. परसों 22 तारीख की सुबह मैंने एक प्रोग्राम का इनॉग्रेशन किया है. इट इज कॉल्ड अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम. वहाँ छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने कोडिंग सीखी और ऐप बनाए हैं. और इसमें एक पार्टिकुलर बच्चा मेरे दिमाग में था गया, उसने स्विगी का पूरा एक अल्टरनेट मॉडल खुद से डिजाइन कर दिया कोडिंग करके. कैन यू बिलीव इट? ही हैज डिजाइन समथिंग लाइक स्विगी. आई वाज लुकिंग एट द डेमोंस्ट्रेशन. मैंने कहा कैसे काम करेगा? उसने मुझे करके दिखाया और उसने बोला कि आप दिल्ली में ऑर्डर प्लेस करेंगे गुजरात में. मैंने कहा गुजरात में. उसने बोला आप एड्रेस सेलेक्ट करिए. आई डिड एंड आई फाउंड a 6th-7th student has made such a great app by using coding. Now where did he learn coding? In the school. Who provided it? NESTS provided it. Amazon and LLF ने free दिया ये सारी training. So that is the kind of work people are doing. I have many organizations, ONGC, Tata Trust, everybody is giving us free computers, labs, sport equipment, cultural musical equipment. They all are doing their bit. आप क्या कर रहे हैं? What are you doing? आपको तो पैसे मिल रहे हैं इस काम के लिए, तो आप समय पे क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरी रिक्वेस्ट तो ये थी, do it before time, but you are not delivering it on time. Now the last point, I have been monitoring the labor. Why there is no labor on the site? Rains have gone. Why labor is still not at least 200? I have understood one thing in my career. I come from a ministry which is an infrastructure ministry. I know how it works.
If 200 labor is there, then material will also come, the planning will also come, everything will work. Because अगर आपने एक बार लेबर वहाँ खड़ी कर दी है तो आप भी नहीं चाहोगे कि उसको फ्री में पैसा दिया जाए. So kindly plan in that manner. I am going to monitor labor. मैं यहाँ बिल्कुल ये नहीं कहना चाहता कि हम ये एक्शन लेंगे वो एक्शन लेंगे, बिल्कुल नहीं. हम कोई एक्शन नहीं लेंगे. हमको सिर्फ आप स्कूल समय के पहले ले लीजिए. Good, give me good quality school before time. And coming to one more point, I have simplified the payment procedure. I am especially telling the people who are from contractor side. I have simplified the payment procedure. NEST has made it as liberal as possible. हो सकता है कल को कोई मुझसे सवाल पूछे कि आपने इतना लिबरल क्यों कर दिया, बट ये मेरा मानना है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर के पास पैसे रहेंगे तो काम तेज होगा. I am working only for making a faster school, good quality school, and I have done my bit. Now I exhort you, I invite you, I request you to kindly make good quality school buildings so that tribal children can go to this school as early as possible, because we have to transform the tribal life through education, and you are doing God's work. So with this, I complete my address, and my request is to make full use of it, and ask such questions are most welcome, and let us hope that at the end of the day, we are all happy and satisfied that we have learned something new, and maybe we will be able to use it in our lives. Thank you.